महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। महक रहा है मधुबन तुमसे, ओ बाबा मधुबन वाले। आज बाप दादा अपने चारों ओर के परमात्मा प्यारे बच्चों को देख रहे, ऐसे परमात्मा प्यारे कोटों में कोई बच्चे, क्योंकि इस समय परमात्मा प्यार का अनुभव कर सकते। सारे कलम में आत्माओं के प्यार, महात्माओं के, धर्मात्माओं के प्यार अनुभव किया, लेकिन परमात्मा प्यार सिर्फ अब संगम युग पर होता है। जो आप सभी बच्चे अनुभव कर रहे, कोई आपसे पूछे परमात्मा कहाँ है, तो क्या जवाब देंगे? मेरे साथ है, मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे दिल में ही रहती। ऐसा अनुभव कर रहे हो ना, आप भी जानते हो, और आपको ही इस प्यार का अनुभव है कि हमारे दिल में बाप रहते और बाप के दिल में हम रहते। जानते हो कि ये परमात्मा प्यार का नशा हमें ही अनुभव करने का भाग्य प्राप्त हुआ है। जब किसी से भी प्यार हो जाता है तो उसकी निशानी क्या होती है? उसकी निशानी है उसके ऊपर कुर्बान होना। परम पिता परमात्मा क्या आप बच्चों से चाहते हैं? वो तो आप सब जानते हैं। बाप के हर एक बच्चे के प्रति यही चाहना है कि मेरा एक एक बच्चा बाप समान बने। जैसे बाप वैसे बच्चों की भी श्रेष्ठ स्थिति बने। वो श्रेष्ठ स्थिति क्या है? संपूर्ण पवित्रता की स्थिति। ऐसी पवित्रता जो स्वप्न में भी अपवित्रता आ नहीं सके, ऐसी संपूर्ण पवित्र स्थिति बना रहे हो, जिस संपूर्ण पवित्रता में अपवित्रता का नाम निशान नहीं। वो तीर्थ बना है तुमसे, ओ अब्बा वो वाले। वो तीर्थ बना है तुमसे, ओ अब्बा वो वाले। महक
लग रहा है मधुबन तुमसे। बापदादा हर बच्चे का भाग्य देख, हर बच्चे को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह। और ये भाग्य इस संगम बड़ी मिलता है और चलता है। सत्युग का भाग्य भी संगम के पुरुषार्थ की प्रारंभ है। इसलिए संगम युग की प्राप्ति सतयुग के प्रारंभ से भी ज्यादा है। अपने भाग्य में खो जाओ। दुनिया वाले तो देखकर पूछते हैं आपको क्या मिला है, और आप लोग उत्तर क्या देते हो? जो पाना था वो पा लिया। फलक से कहते हो कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं है ना फखर। इस भाग्य को जितना स्मृति में लाते रहेंगे उतना हर्षित होते रहेंगे। भाग्यवान आत्मा का चेहरा सदा हर्षित रहेगा, रहता है, रहेगा नहीं रहता है। उनकी दृष्टि, उनकी वृत्ति और उनकी प्रवृत्ति सदा संतुष्ट आत्मा बन स्वयं भी संतुष्ट रहेगी और दूसरों को भी संतुष्ट बनाएगी। In the month of June, Avyakti Parivar welcomes you to remain constantly cheerful, be easy-natured and tolerant. सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। With powerful insights from Mohini Didi, followed by sharings by ancestors, Mama's Murli, followed by Avyakt Murli revision from 1969, and heart-to-heart conversation with seniors. सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, खजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो। ओम शांति। अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है।
हमने मई मास में अचल अडोल एक रस स्थिति बनाने का अभ्यास किया। हर रोज़ की अलग अलग बाप दादा की मुरली की पॉइंट हमें मिलती रही। मोहिनी दीदी ने भी हमें बहुत गहराई से हर बात को समझाया और अनुभव कराया। सो आशा करते हैं कि आप सबको मई मास के इस होमवर्क से बहुत फ़ायदा हुआ होगा और कई अनुभव भी हुए होंगे जो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। हमें खुशी होगी। और आज से अभी हम नया मास शुरू करने जा रहे हैं। जून मास हमारी प्यारी मम्मा का भी मास है, तो मम्मा को भी हम सुनेंगे और मम्मा की शिक्षाएं, मम्मा की धारणाओं को भी हम अपने में धारण करेंगे। और इस मास का बहुत ही सुंदर विषय है, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। तो आज है दिन पहला, जिसका विषय है हर्षित चेहरा संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। अव्यक्त इशारे। अपने इस चेहरे को सदैव हर्षित बनाना, यह संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। चेहरे पर कभी भी कोई परेशानी की रेखा न हो। जैसे संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है, वैसे अपना चेहरा सदैव हर्षित रहे। चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। स्वमान की पॉइंट है, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ। सदा एक रस उमंग उत्साह में रहने के लिए क्या करना है? मैं भगवान का बच्चा हूँ। मैं संतुष्ट मणि हूँ और दूसरों को भी संतुष्ट मणि बना रहा हूँ। अभ्यास की पॉइंट है, भगवान का बनकर मैं बस एक ही गीत गाती हूँ, पाना था सो पा लिया। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। ममा का मास है, जून का मास है और हमको हर मास के लिए एक मास पूरा किस बात की स्थिति रहे, कैसा हमारा स्वरूप रहे, तो सिर्फ सुनने की बात नहीं है। सुनो, मनन चिंतन करो, अभ्यास करो, तो स्वरूप बनेंगे। तो बहुत अच्छा है। देखो, एक मास बाबा पुरुषार्थ कराते हैं एक एक विशेषता के लिए। और मुझे तो आश्चर्य होता है कि चाहे वो अव्यक्त इशारा है, चाहे बाबा का संदेश है, चाहे मुरली में है, एक ही बात आती है उस दिन के लिए। आज बाबा ने सवेरे संदेश में ब्रह्मा बाबा की हर्षित मुक्ता के बारे में बताया। फिर जब अव्यक्त इशारा देखा तो वो भी हर्षित मुक्ता थी। मैं यहाँ बैठी थी तो हर्षित मुख पर विचार चलते हुए
यही दो बातें आई जो फिर बाबा ने मुरली में भी बताई कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरी अपनी संपूर्ण स्थिति। और बाबा ने कहा संपूर्ण पवित्रता या हर बात में भरपूर। तो संपूर्णता का जो कनेक्शन है वो संतुष्टि से है। तो संतुष्टि हमें उतनी होती है जितना मैं संपूर्ण बनती हूँ। चाहे कई कारण होते हैं जिसमें संतुष्टि नहीं होती है, कभी होती है। बहुत कम आत्माएं हैं, पर ज्यादा होनी चाहिए कि जो भी ड्रामानुसार दृश्य चल रहे हैं, पर जैसे बाबा वहा ड्रामा कहते थे, तो मुंह से वो शब्द निकले और महसूस हो। क्योंकि बहुत अच्छा गीत चल रहा था कि जो बाबा हमारा घर है वो हमारी मंजिल भी है। तो संपूर्ण स्थिति और संतुष्टता दोनों का आपस में कनेक्शन है। तो कितना भी बिजी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सेवा भी बढ़ानी है, परंतु अंदर में क्या रहे, मेरी संपूर्णता बढ़ती रहे। फिर बहुत अच्छा बताया कि सरल स्वभाव हो, बहुत ज्यादा बुद्धि चलाना, बहुत ज्यादा हर बात की विस्तार में जाना नहीं, सरल चित्त हो और सहन शक्ति हो। परंतु जितनी जितनी संतुष्टि है उतनी हर्षित मुक्ता होगी। तो आपका चेहरा हर्षित है किसके कारण? संतुष्टि। और संतुष्टि किस बात में होगी? जब संपूर्ण बनेंगे। जब ये ठीक हो जाएगा तो संतुष्ट हो जाएंगे, जब ये हो जाएगा तो हम बस संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं। रियली जो संतुष्ट है वो अपनी संपूर्ण अर्थात संपन्न अर्थात सर्व प्राप्ति है। तो उसका मुझे स्वरूप बनना है। हम लोग हमेशा अपनी संतुष्टि असंतुष्टि बाहर की परिस्थितियों के आधार से बताते हैं या अनुभव करते हैं। लेकिन आज हमको ध्यान देने की बात है कि संतुष्ट आपकी खुद की संपूर्णता या संपन्नता पर है। मैं भरपूर कैसे रहूंगी? सब ठीक रहा है इसलिए नहीं। बाबा से क्या प्राप्त कर रहे हैं? आपसी संबंधों में हमारा कितना स्नेह है, बाबा की मुझे कितनी याद है। तो अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट। हम हमेशा कोई ना कोई कारण से असंतुष्ट हो जाते हैं, और कारण तो हमेशा कोई रहेगा ही। तो ये अंदर में हर एक आज से अपने में अटेंशन दे और परिवर्तन लाए कि मुझे मेरी संतुष्टि मेरी अपनी संपूर्ण स्थिति से है। और संपूर्ण स्थिति क्या है? सर्व प्राप्ति है। सर्व प्राप्ति कहाँ से होनी है? एक बाबा से, दूसरा अपने पुरुषार्थ से। बाबा भी देते हैं, मुझे भी अपने पुरुषार्थ से कभी असंतुष्ट ना हो, कभी अशांत ना हो,
मन जो बार बार कभी अशांत हो जाता है, हलचल में आ जाता है, तो इसलिए लक्ष्य क्या रहे इस मास में कि मुझे सदा हर्षित रहना है, उसके लिए मुझे सदा संपूर्ण और संतुष्ट रहना है। तो इसलिए आज इशारा मिल रहा है। दो बातें हैं, बाबा कह रहे हैं कि सदा हर्षित, तो उसमें बाबा चंद्रमा का मिसाल दे रहे हैं कि आपका चेहरा इतना खुला हो, चंद्रमा की शीतलता कहो, रोशनी कहो, उसमें भी जब 15 कला फुल मून होता है, फिर न्यू मून होता है, और हम लोग न्यू मून थे, अभी काफी बढ़ते बढ़ते फुल मून बन रहे हैं। और फुल मून को जब आप देखेंगे ना तो चेहरा खिल जाता है। मुझे एक संकल्प ही आया, खिला हुआ फूल, खिला हुआ फूल भी देखते हैं ना जैसे, तो एकदम जैसे खुद को भी हर्षित होते हैं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे अगर मैं एक खिला हुआ फूल हूँ। तो चाहे चंद्रमा का हम लें, चाहे फूल का लें, तो आप लोग कल सवेरे जब उठेंगे ना तो अपना चेहरा तो देखते हो ना शीशे में। एक बार बाबा ने कहा था, उठते ही जब जाते हैं आजकल तो अपने को थोड़ा फ्रेश करने, तो शीशा होता है। तो क्या मेरा चेहरा खिला हुआ है या मुरझाया हुआ है? तो कई बार ऐसा होता है, जैसे बाबा तो कह रहे हैं इतनी पवित्रता हो जो सपन में भी अपवित्रता ना हो। लेकिन कई बार थोड़ा बहुत सूक्ष्म में कोई व्यर्थ बातें आ जाती हैं, किसी की कमजोरी से अपने को दुख होने लगता है। जो मनुष्य जो नहीं कर पा रहा है उसकी कमजोरी है। सबको स्नेह नहीं दे पा रहा है तो कमजोरी है। तो मेरा अगर ध्यान कमजोरी की तरफ जाएगा तो वो भी पवित्रता नहीं है। तो इसलिए पवित्रता की भी गहराई में जाके संपूर्ण पवित्रता। और जब हम ज्ञान में आते हैं तो बाबा का वर्षा क्या है? पवित्रता, सुख, शांति और संपन्नता। पवित्रता है तो सुखी है। दुख लेना दुख नहीं लेना है। पवित्र है, इतनी पवित्रता में कुर्बानी करते हैं, इतना त्याग करते हैं, और तो भी सुखी नहीं है। सुख, शांति और संपन्नता, सदा अपने को ऐसे महसूस करेंगे बहुत भाग्यशाली हूं मैं। और जितना संकल्प आपका अपने प्रति, मैं तो संपन्न हूं, मैं तो भाग्यशाली हूं, वो बनता भी जाएगा। लेकिन हमेशा ही किसी न किसी बात पे रोने धोने लगते ही हैं। किसी न किसी बात का दुख होता है, अप्राप्ति लगती है। वो नहीं होना चाहिए। मुझे बाबा ने सब कुछ दिया है, तो ये अगर हमारे संकल्प संपन्नता के होंगे तो संपन्नता हो जाएगी। मुझे तो बाबा बहुत कुछ देते हैं, होता जाएगा। ये नहीं है, ये नहीं है बाबा दे रहा है, बाबा सब कुछ दे रहा है। जो ऐसे सोचते हैं, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि वो हो जाता है।
है ही नहीं तो क्या आएगा ना। तो अगर हमारे संकल्प पवित्रता से हैं, बाबा के कार्य के प्रति हैं, तो संपन्न क्यों नहीं होंगे? मेरे लिए तो नहीं है ना। तो मेरा जो संकल्प है, मेरी जो भावनाएं हैं, वो जरूर पूरी होती है। तो सोचें ऐसा जो भरपूर होना, कि सोचे ही ऐसा नहीं है, ये तो होता नहीं, यहाँ तो यही है, यहाँ तो वही है, तो वैसा ही रहता है। क्योंकि अपने संकल्प, अपनी वृत्ति दृष्टि। एक बार दादी जानकी ने दादी प्रकाशमणि जी को कुछ ऐसे बताया, शांतिवन अभी नया नया था। तो दादी प्रकाशमणि ने कहा 98% सब बहुत अच्छा है, 2% ठीक नहीं है। लेकिन आप लोग 2% जो ठीक नहीं है उसको इतना सोचते हैं कि वो 98 लगता है। एंड दादी जानकी ने हम सबको सुनाया, और दादी ने कहा मेरा तो जैसे सोच ये हो गया कि दादी कहती है मैं अब ऐसे ही अपना दृष्टिकोण बनाऊंगी। तो कहती है मैं दूसरे दिन उठी, सवेरे शांतिवन में सैर करने निकली, तो मुझे इतना मन में ये हुआ, देखो सवेरे सवेरे सफाई हो रही है, सवेरे सवेरे सब्जी आ रही हैं, सभी बाबा के, मतलब कहती है मुझे इतना अच्छा लगा कि 98% तो ठीक ही है ना, 2% कुछ ना कुछ किसी कारण से हो जाता है, पर हम वही 2% की बात करते रहेंगे। जैसे कोई प्रोग्राम होता है, अभी ये इतनी सारी रिट्रीट हुई, भाई तो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। कई होंगे जो एक आध बात ठीक नीचे ऊपर हुई होगी, बस वो यही कहेंगे यहाँ तो ये हो गया, इस बार तो ये हो गया। तो हर एक अपना दृष्टिकोण ऐसा बनाओ, बहुत अच्छा है, भरपूर है, बाबा का भंडारा, चाहे अपने आप सेवा केंद्र पर हैं, ये अंदर में जो हम ले लेते हैं ना, नहीं है, ये तो है ही नहीं, बहुत है, बहुत है, और जो थोड़ा बहुत नहीं है वो भी हो जाएगा। तो हर एक अपना सोच बदले, संकल्प श्रेष्ठ रखे, उच्च रखे, और फिर उसका रिजल्ट देखिए कैसा निकलता है। हमने तो अपनी सारी जीवन में यही देखा है। पूछा तुम्हारी नाव में क्या है, मेरी नाव में सब कुछ है, क्या चाहिए आपको, न कि मेरे नाव में कुछ नहीं है। समझा? मेरी बात को समझ रहे? हाँ, कि संकल्प की संपन्नता बनाओ पहले। एक बार दादी जानकी ने कहा कि मुझे ये सुनना ही अच्छा नहीं लगता जब बाबा के बच्चे कहते मेरे पास नहीं है, दादी मेरे पास नहीं है, कभी इनफ पैसा नहीं है, कभी ये नहीं। दादी ने कहा हो ही नहीं सकता है, बाबा के बच्चा तो भरपूर ही रहेगा। तो ये हमारा सोच, बाबा का मैं संतान हूँ, संपन्न हूँ। तो स्वरूप कैसा हो हमारा, चाहे वो संपूर्ण चंद्रमा की तरफ 16 कला, या पूरा खिला हुआ फूल हर्षित मुख, तो वो हर्षित मुक्ता कोई कोशिश करने वाली नहीं है, वो संतुष्टि से कनेक्ट है। जो संतुष्ट होगा ना, जब आप उसको देखेंगे तो उसका चेहरा संतुष्ट रहेगा। और संतुष्ट वो होता है
जो अपनी यात्रा में संपूर्ण बनता जाता है। तो फिर लक्ष्य क्या है? संपूर्ण बनने का। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं अव्यक्ति इशारा है, 24 घंटे के लिए अभ्यास है, मनन चिंतन भी है। हर्षित चेहरा संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। कई पूछते हैं, कई अपना अनुभव सुनाते हैं कि भोजन तो कहीं भी मिलता है, हाँ, पर यहाँ पर मुस्कुराते हुए देते हैं ना, तो वो मुस्कुराहट का ज्यादा वर्णन कर रहे थे भोजन से। तो हर्षित मुक्ता बहुत सेवा करती है आजकल खासकर। तो बाहर की नहीं, बाहर की देवान की है, ये अपनी आप की सर्व प्राप्तियों की संतुष्टता से हर्षित मुक्ता है। तो बाबा कहते हैं कि अपने इस चेहरे को सदा हर्षित बनाना ये संगम युग की सबसे बड़ी गिफ्ट है। चेहरे पर कभी भी कोई परेशानी ना हो। परेशानी का मतलब है अपनी शान से आप बाहर आ गए। बाबा ने जो हमें सम्मान दिया है, शान दी है, उससे परे होना, परेशान की रेखाएं ना हो। आपके चेहरे पर परेशानी की रेखाएं ना हो। तो बाबा कह रहे हैं कि जैसे संपूर्ण चंद्रमा, बाबा कहते हैं संपूर्ण चंद्रमा कितना सुंदर लगता है। बाबा कहते हैं वैसे अपना चेहरा सदा खिला रहे, हर्षित रहे। चमकता भी है चंद्रमा। तो बाबा कहते हैं चेहरा ऐसा चमकता हुआ हो, बाबा कहते हैं जो और भी आपके चेहरे में अपना रूप देख सके। आपकी मुस्कुराहट से कितने ही लोग जो कभी नहीं मुस्कुराए होंगे, उनको आपको देखने के बाद लेगा मैं क्यों नहीं अपना चेहरा मेरा क्या। क्योंकि ये जो गुण होते हैं ना, ये इसकी जो जो देखते हैं या वाइब्रेशंस होती हैं, वो बहुत सेवा करती हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसके लिए अपनी बाबा कहते हैं नेचर को सरल बनाओ। बहुत नहीं सोचो कोई भी बात को। बाबा कहते हैं सरल बनाओ और सहनशील बनाओ। मैं हमेशा एक उदाहरण सुनाती हूँ। अर्जेंटीना में मोरा बहन मुझे एक जर्नलिस्ट के पास ले जाती थी। वो बुजुर्ग था काफी, पर थोड़ी उसमें करवाहट थी, क्योंकि आजकल क्या समाचार होते हैं ना, वो समाचार सुनाते सुनाते तो मुझे याद है कि मुस्कुराना नहीं था। हम लोग तो जब किसी से भी मिलते हैं तो मुस्कुराते हुए दृष्टि देते हैं। फिर दूसरी बार मिलने गए, तीसरी बार गए, उन चेहरे पर मुस्कुराहट आने लगी। न मुस्कुराने वाला भी मुस्कुरा जाए, क्योंकि उसको हो सकता है अपनी दुख दर्द है या कोई समस्या है। तो इसलिए अभी हम कुछ क्षणों के लिए हर्षित मुख, संतुष्टा और संपूर्णता, और उसके लिए सरल स्वभाव और सहनशील। छोटी छोटी बात में हमको मुरझाना नहीं है। ओम शांति।
ओम शांति। बाबा तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। अव्यक्त वाणी, तारीख है 25 जून 1977। पवित्रता की संपूर्ण स्टेज। लवफुल और लवफुल का बैलेंस हो, दोनों साथ साथ हो। यह जो कमजोरी की लहर है, यह ऐसे नहीं कि विनाश के कारण प्रत्यक्ष हो गए हैं। कमजोरी बहुत समय की होती, लेकिन अभी छिप नहीं सकते। पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती है। पहले अंदर अंदर गुप्त कमजोरी चलती रहती। अभी समय नजदीक आ रहा है, इसलिए कमजोरी छिप नहीं सकती। राजा बनने वाला, प्रजा पद वाले, कम पद पाने वाले, सेवाधारी बनने वाले, सब अभी प्रत्यक्ष होंगे। अंत में जो साक्षात्कार कहा है वह कैसे होगा? यह साक्षात्कार करा रहे हैं। बाकी ऐसे नहीं है, कमजोरी नहीं थी, अब हुई है, लेकिन अब प्रसिद्ध रूप में चांस मिला है। जैसे समाप्ति के समय सब बीमारी निकलती, वैसे समाप्ति का समय होने के कारण हर एक की वैरायटी कमजोरियां प्रत्यक्ष होंगी। अभी तो एक लहर दिखी है, और भी कई लहरें देखेंगे। अच्छा, आगे की मुरली कल सुनेंगे। ओम शांति। तेरी मीठी मुरली की धुन सुन कर के मन हर्षाए। हो सुन कर के मन हर्षाए। मीठी प्यारी मम्मा, ममता मई जगदम्बा। ये ठीक बात है कि ये दिन उस दिनों से भी अच्छे हैं। क्यों? कि कमाई इसमें करते हैं। वो तो खाएंगे, खाते 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 फूट जाएगा। यहाँ तो भरते हैं ना, तो इधर तो भरते रहते हैं, तो भरने के दिन अच्छे है ना। और यहाँ हमको बाप का संग मिलता है, उसके साथ ये हम अपना सौभाग्य बनाते हैं। तो ये सौभाग्य बनाने के पीछे तो सौभाग्य की प्रारंभ पाएंगे। 16 कला से फिर 16 कला कमती पढ़ते पढ़ते 14 कला होते जाएंगे। तो वो तो हुआ खाते खाते रहना, और ये है अकाउंट में जमा करते रहना। तो ये जमा के दिन अच्छे हैं, जो हम अकाउंट में डालते भरपूर होते जाते हैं, और बाप के संग के दिन है। तो ये दिन बहुत मीठे हैं जो अभी गुजर रहे हैं, उसमें भी अभी के प्रेजेंट। क्यों? कि कमाई के दिन में भी, इस संगम में भी ये टाइम कमाई का है। संगम का सारा टाइम भी आगे चल कर तो विनाश का जब चलेंगी तो उसी टाइम थोड़ी बैठ के ऐसे सुन सकेंगे, कमाई कर सकेंगे, नहीं। कमाई का ये अभी का टाइम है, ये जो बीच का थोड़ा टाइम है, इसी में हम ये कमाई कर सक रहे हैं। इनके बाद दिन और भी खराब होते जाएंगे, जिसमें हम बैठ कर करके ऐसे सुने करे मुश्किल पड़ता जाएगा।
तो ये सभी बातें समझने की हैं और इसमें ये अभी प्रेजेंट हमारा एक एक दिन जो बीतता जा रहा है ये सब सुहावने दिन है। संगम में भी ये सुहावने दिन है। क्यों? कमाई के दिन है। पीछे आगे चल कर करके कमाई नहीं होगी, फिर जो अपना स्टॉक अभी जमा रखा ना, तो उसी टाइम पर भी उसी से काम लेना पड़ेगा ना। जितनी जितनी जिसकी धारणा होंगी तो उस धारणा को फिर उसमें लगाना पड़ेगा, जितनी ताकत होंगी। तो ताकत तो अभी जमा करते हो, नहीं तो ये दिन संगम में भी अभी के दिन प्रेजेंट, तो उसी दिनों में जिसमें हम ये ऐसे कमाई करने को कर रहे हैं। करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का, प्यार देकर अर्थ समझाया है सच्चे प्यार का। कैसे करे हम शुक्रिया मम्मा तेरे उपकार का। Om Shanti. Welcome to Avyakti Parivar. So in month of May, we did practice to have our stage unshakable, immovable and constant. I'm sure everyone had wonderful experience. Every day we had beautiful point from Avyakt bapdada's Murli, and Mohini Didi also helped us to churn, think about, took us into deep understanding, and I'm sure everyone had wonderful experience being unshakable, immovable. We'll be happy if you can share your experience with us through email, WhatsApp or text. So now today we are starting our new month. It's month of June. June month is Mama's month also. So every day we'll be listening to her as well. And it's beautiful topic for month of June: to remain constantly cheerful, be easy natured and tolerant. Exactly like Mama, right? So now today is day 1. Today's topic: cheerful face is the biggest gift of the confluence age. Avyakt signal. To make your face constantly cheerful is the biggest gift of the confluence age. Never let there be any lines of distress on your face. A full moon looks so beautiful. In the same way, let your face be constantly cheerful. Let your face shine so much that others are able to see their form in your face. For this, make your nature simple and be tolerant. Self-respect point. I am a contented soul. What should you do in order to remain constantly stable in the same enthusiasm and zeal? Have the awareness, I am a child of God. I am a contentment jewel, and I help others become contentment jewels. By remaining in this self-respect, I stay constantly cheerful and enthusiastic. Practice. Having belonged to God, I sing only one song. Whatever was to be attained, I have attained. Now we will listen to Mohini Didi ji.
Om Shanti. So I can see everyone's face like full moon. Right. I was very fortunate to meet Mama and invite Mama to the center, which was very new in New Delhi. We had just started quite a good center. So Mama came and spent about 5 days. And of course, even before meeting Mama in Madhuban or other places, but this was like a very close connection when 5 days she spent with us. It's like, as I said, there is no one like Shiv Baba, no one like Brahma Baba. Same I always say, there is no one like Mama. Because her, of course, cheerfulness, but her faith in Baba. Because when there is faith in Baba, then you have self-trust. Because that faith changes into what Baba says to me. So I have self-trust. And that self-trust was very visible in Mama. And, I met her many times. To see, one thing I noticed in her and of course Dadis, that they are so consistent. They don't go like up and down, mood is not good. They are like consistent. And that power to be consistent is very important. Because anyone, whether it is students or your companions, if they see you keep fluctuating, you do something today, then you somebody was sharing something and I said, why this one had to do that? It's always like that. That means on what basis you decide. And also, there is a saying that face is the index of mind. What is in your mind, if your face shows. Even you might say, try to hide it, but it does appear in some way or other, whether it is through your smile or your, not sharing smile, not sharing drishti, everything. And that is why one thing Dadi Janki always used to say, why your feelings come on your face, why your face changes. And then she will look at, immediately say, again, your face has changed. And then she will say, have face like me. In the sense of always full, always blossomed, always happy. So we take this gift of confluence age to remain very, very full, cheerful. Everything is like peaceful, full of peace. So full word has to be remembered. Cheerful. Right? So, yeah, looking always forward, looking upwards. And also, of course, inwards. Where I look first. Upwards. Right? And from upwards, when I bring it inwards, I look at myself, look at Baba, look at myself, and then look at everyone. But if I look at others and then me, then Baba. Upwards, look at Baba first, take drishti from Baba. Brahma Baba, whenever he met someone, he will spend few minutes with Shiv Baba. So he took from up, in, and then gave others. This is a very good practice to keep us very light and cheerful. I look at Baba, then I take that
give to myself, and then share with others. Right? So our face should always be what I take from Baba. Baba's light, Baba's love, Baba's peace, everything from Baba. But if I look others, can't be cheerful all the time. I look at Baba. So same for us, it was so good that Brahma Baba, Mama, we always look at them. I could never forget Brahma Baba's face all the time. All different diverse oppositions, obstacles, difficulties. But his face was same, cheerful. And of course, one of things Baba said, Baba's cheerfulness coming is what I am becoming tomorrow. Sri Krishna's face is always cheerful. I am going to be this tomorrow. So what are we becoming? What are we becoming? Deity, divine. So our face has to, people should immediately say, oh, you really look like goddess. Baba gives example of go to Lakshminarayan temple in Delhi. My college of journalism was next door to Lakshminarayan temple. So every evening when I go to college, I used to go in the temple. And at the entrance, this is a big temple with full-size Lakshminarayan's idols. And I used to love the eyes, and so I will spend 5 minutes, then I go for my, college. So when Baba mentioned that the face was like, feels so good looking at that. So same should be us. So the gift of confluence age, cheerful face. Right? So Baba said, cheerful face is the biggest gift of confluence age. Never crying face, And tolerance, serene nature, but tolerance. Mama, as you all know, had some bodily, was not only body was not well, but it was painful. It was. And I remember that just few days, like 10 days before she left body, I was there. And other dadis, they used to stay all the time around Mama. So many dadis were sitting and they were asking Mama, Mama, what you thinking? She was so cheerful, drama. Even the way she was gradually getting ready, she knew that she's leaving body because there was no treatment. I couldn't believe. I still think, how can she just say drama and smile? And that's what, when I say, we receive from them. So Baba says, to make your face constantly cheerful. So Baba says, is the biggest gift of the confluence age. Never let there be any signs or lines of, Baba says, distress on your face. A full moon, Baba says, looks so beautiful. In the same way, let your face be constantly cheerful.
So the truth, Baba is talking about. Baba said, let your face shine so much that others can see, are able to see their face, their form in your face. For this, Baba says, make your nature. It could be simple, it could be serene, and be tolerant. Sometimes little things bother us, irritates us, but Baba is saying, be tolerant. So it's very beautiful. I don't know if it requires a lot of efforts, but attention. Constantly cheerful. And then, when you walk around in the nature, you go around anywhere, everyone will be very happy. The vibrations which comes from your cheerfulness. So I think we will do this practice for this month, right? Okay. Om Shanti. Shanti Didi and Shanti Avyakti Parivar. It's very special to be here with you and with everybody, the wonderful family here in Peace Village and all the regional retreat participants. So my name is Moira and I'm serving in Argentina. This is about Baba saying this morning in the Murli that we have to accumulate. He says you do accumulate, but not for all time. So I was thinking how, regarding silence power, how Mama was so sweet, so responsible, always engaged, and yet so silent. Daddy Janki spoke so much to all of us, even sometimes her chit-chats were until late, and yet she was so silent. Daddy Ji was so playful and loving, and she was always surrounded by people, and in her eyes there was so much silence. And Daddy Gulzar was so quiet, so still. And when we came in her presence, we became silent. So you witnessed how they became so full. How did they accumulate for all time? No waste, no. Every time Baba keeps saying, just become free from waste, free from waste. And when accumulation happens, when we don't waste it. But like Baba said, you all accumulate, and then when there is waste, then we lose it. No? So it's not consistent. But with Dadis, it's like they don't waste it. Don't, little things like, let's say I gave you something or said something to you. And then after that, when it finished, I am thinking, I shouldn't have said it. Maybe I should have, so we go back. I remember that Brahma Baba, when Murli finishes, he will come out and some of us will walk with him to his room, and he said, whatever Baba said last Kalpa, Baba said that again. Like full stop.
not thinking back. I remember one time I tried to practice on that if something, let's say, have been done, even sometimes it might not be right, but just have good wishes instead of thinking I shouldn't have, why did this happen? It's like we go back, all that is wastage. And then accumulation, that means you are not consistently accumulating, but rather you are wasting. One is spending. Spending is all right because it will increase, but wastage is wastage. Right. And that is why their silence, everything was natural for them. It's not they were making efforts, because when there is no wastage, then your pure energy is very consistent. And that could be silence or peaceful, loving or sweet. All these qualities they all had. Yeah. And that's what we all have to pay attention. Not keep thinking about 10 days ago, 30 days ago, last time when we met, So, to remember good thing is all right, but what didn't work out, what you were not at that time, to think about all that, it's quite a wastage, loss. Thank you. That's very useful. Didi, when we design retreats, whether it's the retreat in India, the big retreat for the instruments, or even this retreat, we always feel it's important to include silence. So either we propose a silence day or a silence morning, or now we propose to have our breakfast in silence. And we think it's important, and we come with a full aim that this is going to be really a wonderful experience. And the aim of this retreat was to make like the Murli alive, like 10 minutes silence, then some silent movement, then a silent breakfast. But what happens to us is that when we go to the dining room, we are so happy or excited to be together, because being with a family is such an amazing experience and gift, that we think that chatting with each other is more important than silence. So we forget the aim the minute we walk out of here. And so what are we lacking? That, well, on one hand, we eager and we want to be silent, we want the benefit of being silent, but on the other hand, we think that, our chit-chats are more attractive. Yeah. More pull. We're drawn to that. I think we have to understand silence. Silence is not only not speaking, verbal silence, but silence is actually of mind. That means this nature of too much thinking. Because if you are speaking, that means you are thinking. And I don't know, sometimes when I notice people keep talking, I am kind of surprised because, I don't have much to talk. Even as you said, we have so much, but I talk but also that helps others. Many come to me, I need 20 minutes, I want to talk. I said, okay. And within 5-6 minutes, they are done. No, because we are silent, so they could summarize what they have to say. A lot of things you will find you are giving others also as a gift. So I think that silence is kind of, it is a stage, but I don't know how to describe it. But I always love silence, in the sense of we talk, but I remember in Pandavaman there was a time we had a telephone exchange. That means you have to go and they will dial for you wherever you want to. And then every month they give us bill. So they say you call very often, but your bill is minimum. So I said, yeah, because I only talk what I need to talk. But some keep going on.
why? And then so much bill happens, and a lot of people on phone, on computer, now they talk through computer, right? So I think somewhere the homework is not done. What really I need to talk, instead of keep talking. And it's in a way entertaining one's own self too, through talking. Wow. And I don't know how to describe because I'm not really too much, I talk, but I'm basically very, full, and I feel very happy and all that. If I could be silent, Right. So, yeah, somebody who is, as you all saying, you all are trying, could share more. Well, one thing I must admit that I think our conversations are changing. Sometimes about service, not always, but also about practices, about how we're doing in our own efforts. And I think I appreciate that. It's like we feel now a shift in the way we are interacting, but it's becoming spiritual. Yeah. I remember when you came to Argentina with Daddy Ji, you came with Ishu Daddy and Mohini Ben from Madhuban, and we had 3 meals with you, and Uma Ben was cooking for you, and she just put a spoonful of each item on Daddy Ji's plate. She ate very little. She was all of you were so silent. It didn't take too long for you to eat, but then there was a chit-chat, and it became such a, around Daddy Ji, and it was so beautiful, like so lively, sharing with her. So maybe we could try less food, a bit of silence, and then a chit-chat. So this is a question about honesty. I'm studying a Murli in which Baba is talking about the complete and perfect stage of purity. And so he's saying in that Murli that if you use the treasures that I have given you in any other way other than my elevated task, that will be dishonest. So he says the treasures are the mind, the treasures. Baba's saying that if you use the treasures I gave you in any other way than in my elevated task, it would be called dishonesty. So he says the treasures are the mind, the thoughts, the deeds, the words, the body, your wealth. So when you see us as an honest soul, if you were to say so-and-so is honest, what would you be looking at? I am sure. I feel you all are very, very honest. And but you yourself said, like I give example that we say mind is Baba's and time is Baba's. But let's say, you sit on computer, you have to do your task. But sometimes that you're spending a lot of time on computer looking for Google this, for food, Google this. Like you are spending a lot of time, it is not your time. It's for yajna seva, right? If you don't have something to through words, then mansa seva or in silence, So I think somewhere there, and Baba has taught us even about spending money, that how actually everything, whatever you have, you get, it belongs to Baba, But when we spend, sometimes I feel that it's not necessary that much because I have to create my fortune also. So I think we have to check a little more, especially for mind. Yeah. I think that's where a lot is. I don't know about dishonesty, but it's not used for Baba's task Right. all the time, whether it's in remembrance or
doing karma yoga or churning, because when I saw dadis, they only talk about what did Baba say this morning, what we haven't done when they listen Murli, which service is left. Like their whole life is only about knowledge and efforts, and for us, I think it's a little bit less in percentage. But of course, everyone honest, and they say no honest heart, then Master is pleased with your honest heart. I see Baba is pleased with all of you. So you all are honest. But little bit, you can pay more attention. Yeah. You were saying this morning that for a yagya to be lit, there had to be a sacrifice, and Baba was the first one to step in and completely surrender. And when I was reading this Murli, I thought that I was completely surrendered, but when it comes to thinking of, how am I using my mind, how am I using my body, am I feeding it what it requires or what I like, then I realized that it's a percentage of surrender. It has to be a lot more. Little more. Yeah. Okay. Thank you. Lot has been done. Right. Just little more. Right. Don't say lot more. Little more. Okay, a little more. Bit by bit. Okay, and then this Baba this morning was saying that the queue is stuck because we are still caught up in wasteful thinking. And this you were just mentioning about using time in a worthwhile way. And this is about the addiction to devices. And although we know how harmful they are, how we are being distracted, how much we lose time, how, the content, maybe you get a nice link with something from the yagya, from something jnani, so you go into that link, and beneath that there's a whole lot, so you end up scrolling that. And all that is deteriorating our concentration power, our ability to churn. It gives space for like some form of laziness, to, just being entertained. So how can we, and I think everybody has a little bit of this, maybe in different percentages, but how can we detox from the use of devices? Like right now I'm practicing not to use it after class now, or before going to bed, not to use my phone, not to watch, not to see my last messages. But then in the morning I want to listen to the Murli, so I've got it in my hand again. and then I get tempted. So how can we overcome this inertia that we know it's not right, but we end up using it or doing it? It is now both days, Sometimes we feel we need phone all the time. But then there was a time, phone I know, but for computer, like we had, especially I know with, I have recently, but we had a fixed, like Janti, when 2 hours she has afternoon, 4 to 6, because she doesn't rest during the day, where she listens and answers and complete it. I am not able to do that in the sense of lot of time, so spending lot. So I think everyone has to create some schedule. Like I would like that after 9:30 or 9 night time, I don't go in admin or, unless it's really urgent. But there are some who until last, they keep looking at messages, they keep reading it. And it could affect your sleep. And when you wake up in the morning, you will wake up with the same thought. So there was one time, like half an hour, sit in Baba's room or sit together, we all meditate to culminate our day. So if you don't do that, then night, the way you finish night begins in the morning, because same thought will come. Right. So we should try, especially night time or during day also.
But there are certain situations. Once we were, I think, in Guatemala, and might remember that having bhatti of 2 hours, and everyone had their phone off, and there was about 10, 12 souls coming from El Salvador. And so they were trying, because, when people come from El Salvador, it's a little bit dangerous. So they were caught. So they needed help, right? And they are calling, but we are in bhatti, nobody is answering. And really, in the end, some or other, they were able to get. So whole big question came that they are really desperate to get help, but our phones are off because they are in bhatti. And I think that they have done in Peace Village now. I said, if really something happened, emergency, and you all are, so one person takes telephone for the night time, so that we can get through. So I think somewhere we all have to look at how we manage so that we are not cut off if we have to attend to something. And it's not that all of us have to do it. Create some kind of system where you have enough time where you could turn off telephone, not attend. Otherwise, like whole day, it goes on, whole day. I know that even with Bhumi, when there's constant phone calls. I mean, it's here is still okay, but in India, not a single minute phone call stops. So I always tell us that give someone for an hour or turn off for 2 hours. But sometimes calls from India are coming at the time when our time is different there. Right. So I think that somewhere for one's own, good health, good mind, it's important to be silent and not depend on these devices. Right. So somewhere once you manage, you plan properly, there could be a good balance of silence and then communication, which is very important. But not become addictive to it, These days they're doing a lot of, they had retreat also, on detox from devices. Right. One brother from Hyderabad, Bala is his name, has written a book. It's very interesting to see that how we really get addicted to all these things. Yeah. And then we feel guilty because we say, gosh, half an hour's gone. I've just been losing my time. Okay, thank you, Didi. That's very practical. Another thing is, some time ago, you encouraged us and said, okay, everybody move out of the centers. Let's do big programs again. Before we used to do big programs. And so that is happening with not so much effort these days. What I see, if I can mention at least 4 things that I can share with you now, is like in Colombia, for example, they were in a book fair and hundreds of thousands of people went past Baba's stand. It was amazing. And in Mexico, they did a program for 2,000 teachers, which for some time we hadn't done. In Peru, they had 1,200 business people. We did a tour of 11 cities. We met 800,000 people. So somehow this is possible because after the pandemic, we kind of stayed within our centers in a bit of a comfort zone. So now we are moving out and we are doing ourselves what we would like people to do, which is leave their homes and come to us. But now we have to leave our places and go to them somehow. But at the same time, we have to be very focused and not get entertained with service so much to miss out on the inner work that needs to be done at this time to create an atmosphere, as was said in the Murli, that people can then benefit from. So I personally find that when I get too engaged, I again lose my balance. So it's as if I do either that or this. So how can we be like in a safe, balanced space?
No, definitely I said, I don't know, I did say maybe for big programs, but one is that focus on service, in the sense of professionals and, have little program for lawyers, get-togethers, but go out in the sense of possibly as book, they talked about this book fair. I read also the news. And so something which is happening in your area, wherever, go in where you always could meet people of different kind in different programs. I was encouraging that lot. If you are, so when you go out, then the contacts increase, and then, so you are more giving message, but Baba always used to say that you should be invited more from outside. I think that's the best way. And then, of course, I don't know how many big programs we can do, but I do encourage expansion in a different way, like on a regular basis. Right. You do some get-togethers, and like one thing we have done, of course, we have created this whole team for admin and sustenance and all that. There are 16 of them. But then with them, what we call not wings, but we call it what it is? Network. So everyone has like interfaith and all services. We have small groups, lectures in universities serving politicians, media, like this. About how many network is there? 22, something like that. So this way, what is happening now? They are talking about it, they're moving forward, preparing guidelines. So in a very natural, smooth way, the service is happening, Right. where you have a good balance also. Right. And Okay. finished. Okay, my time, so I had one more. Yeah, very, very good conversation. Useful. Om Shanti, thank you. So tomorrow is Monday, the day of silence, as we had been doing, and so we'll try to focus and have awareness that it's the day of silence, Monday. Amrit Vela will be connecting to Peaceful for 3:30 to 4:45 a.m. 6:30 a.m. meditation will start, followed by 7 to 8 a.m. Hindi and English Murli will connect to Peaceful Age. In the evening, 5 to 5:30 p.m. Avyakti Children Murli class, 6 o'clock Bhatti will start, followed by special meditation with Mohini Didi, 7 to 7:30 p.m., followed by Hindi series, English series, and chit-chat. Now, let's remember Baba and take drishti from Didi. सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो खजाना खुशी का लुटाते रहो खजाना खुशी का लुटाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो गाते रहो गुनगुनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो सदा खुश रहो
अच्छा ही होगा, फिक्र क्यों करे। हर बात में सबका कल्याण है, हर बात में सबका कल्याण है। खुशी का मरम ये सुनाते रहो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो। खजाना खुशी का लुटाते रहो, सदा खुश रहो। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया। खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं, खुशी जैसी कोई दवा ही नहीं। ये अमृत है सबको पिलाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। मिलन प्यारे प्रभु से मनाते रहो, सदा खुश रहो। ओम शांति, ओम शांति।